Assalamu alaikum. I start with the great name of Allah Pak, who is the most beneficent and the most merciful. Kindly recite Durud Pak. Today I will discuss here force, motion, and dynamics of chapter number 5, force and motion. Dynamics. The word dynamics is derived from Greek word dynamai, meaning power. It is a branch of physics which deals with causes of motion and their effects. डायनेमिक वर्ड ग्रीक ज़बान के लफ्ज़ डायनेमाई से निकला है, जिसकी मीनिंग है पावर यानी ताकत। ये फ़िज़िक्स की एक शाख है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मोशन मीन्स मूवमेंट एंड देयर इफ़ेक्ट्स मीन और इसके असरात। फोर्स इन एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंस टू प्रोड्यूस और विच स्टॉप और टेंस टू स्टॉप मोशन इन अ बॉडी। और फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना यानी कि उसको पुश करना या पुल करना फोर्स कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक टेबल है जिसे हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, इसे हम फोर्स कहते हैं। फोर्स को हम कैपिटल एफ से सिम्बलाइज करते हैं। फार्मूला है F इज इक्वल टू ma, F फॉर फोर्स, m फॉर मास एंड a फॉर एक्सेलरेशन। यूनिट है न्यूटन और नेचर है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो फासला तय कर रही हो और उसका कोई डायरेक्शन हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एनीथिंग अराउंड अस दैट मूव्स वी से दैट इज़ इन मोशन। इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी वेरियस थिंग मूविंग अराउंड अस। सिंपल एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव अ vehicle moving on the road, people are crossing the street, and our solar system, Sun, and other planets also undergo motion. So, what is motion? The position of the object and the time to which is changing anywhere, or the change in position of body with time is what we call motion in simple words. मोशन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में रहे उसे हम मोशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक टेबल है और वो टेबल ए से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है, तो वो मूविंग कंडीशन को हम मोशन कहेंगे। थैंक्स टू अल्लाह ऑन लर्निंग समथिंग न्यू। स्टे सेफ, स्टे होम, लव योर पेरेंट्स। अल्लाह हाफिज़।